this opportunity to share the screen with that person. जिस इंसान के बारे में अगर मैं बोलूँ, that person is growing in every damn field. That person is doing every damn thing to improve the, you could say, this industry in the market, that is information technology. The person who is doing every damn thing. मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जिस इंसान को मैं आप बुलाने वाले हैं, show him that respect because he deserves that respect. He deserves each and every damn thing whatever he did in his life. You know, I met him only for the once. जब हमारा एक शूट था GoDaddy के रिगार्डिंग, मैंने तब उनको फर्स्ट टाइम मिला था, and that time I realized one thing, that now you know that name, but मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा. why, मतलब मैंने जितना, why I am inspired from him, because मैंने जितना भी उनके बारे में रिसर्च किया, जो भी देखा, मतलब he is doing every damn thing, like rather being an athlete, he is known as an Iron Man, you know, being it as any damn thing. He is connected to IT, he is connected to economics, he is connected to every damn field. जो भी कोई फील्ड आती है वो हर एक फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं. एंड वी आर लकी इनफ, यू गाइज इन CIPL आर लकी इनफ कि आज हम उस इंसान को सुनने वाले हैं, हम उस इंसान से जानने वाले हैं, कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है. एग्जैक्टली एज एवरीबडी सेइंग, एक्साइटमेंट लेवल इज हाई, माइन इज ऑल्सो हाई. द टाइम इज हियर टू इनवाइट दैट पर्सनैलिटी, यू नो, the managing director, the vice president of GoDaddy India, Mr. Nikhil Arora, soon will be joining this session. You know, मैं बस आप सबको इतना समझाना चाहूँगा, listen him very carefully. आज वो बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं. I am damn excited tonight to have her. Very soon, within a few seconds, he will be here. I think so. He is here. Yeah, please welcome Mr. Nikhil Arora. He is here. He'll be here within few seconds, guys. You know, a man who is creating history in this information technology field. Hello, Nikhil, sir. How are you? Good. How are you, Rohit? I'm doing great, sir. I'm doing great. Nice to see you over here, sir. The team CIPL is really excited and, you know, really feeling so much pleasure to invite you over here, to have you over here in this session, sir. Thank you, Rohit, and thank you. I was listening to you, you know, after your announcement of award and startup award. I'm tempted to participate. Very good thing, जिसको you know blogging के लिए select कर रहे हैं top 100 winners को और startup fund. So I think you know, on behalf of also students, I must commend you for that. Let me see. Can your voice is breaking, sir. Okay, let me try from. No, sir, it's still breaking. Mobile, like maybe iPad. Yeah, Okay, I'll just log off and log back. Sure, sir. Sure. We are waiting for you eagerly. See, as you could see, he'll be here once again. थोड़ा सा technical issue could be there. But see, that personality, उनके स्क्रीन पे आते ही what a charm he has on his face. You know, मैं बता रहा हूँ, जितना आप उनको ढंग से सुनोगे, आप उतनी ज्यादा नॉलेज आज अपने साथ लेके जाओगे. He is a knowledge house, a powerhouse in that knowledge basically. The kind of ideas, the kind of things he have. मुझे अभी मैं उनका एक आर्टिकल देख रहा था, एक इंटरव्यू सुन रहा था on that Republic TV. He was there to represent GoDaddy, as in. Just give me a moment. Let me check if he's here. Yeah. He'll be here soon. Can you hear me, Welcome Rohit? back. Is it better? Yeah, sir. Perfect, sir. Perfect. Okay. Thank you. So first of all, thank you, Rohit. I was listening to your introduction. Firstly, big congratulations जो आप ब्लॉगर्स के लिए जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और स्टार्टअप इंसेंटिव, दैट्स वेरी कमेंडेबल. स्पेशली आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ, आई वुड से, एंजाइटी, फियर, अनसर्टनिटी, एंड इसमें इस तरीके के इंकरेजमेंट यू नो बहुत मायने रखती है, स्पेशली स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के लिए.
Thank you so much, sir. Thank you so much for your words. So Rohit, if I may, I mean, एक तो आपने introduction इतनी, सबसे बड़ी learning जो आज की डेट में है, I keep talking about आज की डेट में हम जहाँ पे हैं, जिस वर्ल्ड में हैं, I think सबकी level playing field same हो गई है. Everybody has become a leader. जो पहले होता था कि आप leadership में आप इतने hierarchy में होते थे, इस situation में 18-year-old and 80-year-old is actually at the same place because उनकी learning same time पे हो रही है. दूसरा, I think is the first time all of us are actually kind of thinking of us as citizens. काम करते रहते थे, but अब की डेट में the involvement with the what we call our responsibility of being a citizen has certainly become more conscious and important for us, right? Yeah. And thirdly, I think innovation जो startup की lifeline होती है, I don't think आप example दे रहे थे कि the most of the bigger startups have come out of crisis. So if you look back at 2000, 2008, 2007, 2008 जब financial crisis हुआ था, जो Airbnb, Uber, ये सब उसी time से निकले थे. Yes, so in that sense, if you're at that age and that stage of your life, there's no better opportunity while there's a lot of health problems the world needs to solve. Like from a startup point of view, I think this will be an opportunity of a lifetime to actually change the dynamics of how startups work. So what I'll do is, I'll just again, goal is to have more questions and more kind of dialogue and answer things which people have on mind. But I'll just talk through basically what's happening today from a macro trend perspective. Where do we think the shifts are happening, and then get into why, more importantly, the digital education part and digital skilling will play such a massive role in where this world goes, right? Yes. So first of all, I think what happened in last probably 5 years in terms of digital transformation is happening in last 5 weeks or literally 2 months, because अब तक यही होता था कि जिस बिजनेस को डिजिटल नहीं होना था वो नहीं होता था, काम चल रहा है, और जिसको डिजिटल होना था वो होता था. Now that's all gone, right? I mean, there is no world without being digital. That means everybody has to find a way to connect to customers digitally. Everybody has to find a way to talk to customers, engage with customers, and retain the customers, right? So, जो एक luxury होती थी वो अब almost commodity बन गई है. So I think this audience के लिए, I mean, this is a great opportunity because every business will now want to be digital. The opportunity will be to help them understand how much digital, because digital का भी कोई अंत नहीं कि आप एक एंड से दूसरे एंड जाएं, तो हर बिजनेस का जो लाइफ साइकिल होता है और उनका कस्टमर जर्नी लाइन होता है वो डिफरेंट होता है. तो फर्स्ट इज दैट. सेकेंड, आई थिंक हाइपर लोकल फोकस. आई थिंक आप सब देखें आज के ज़माने में, मेरे ख्याल से अगर हम सच बोलें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होती थी कि 5-6 दुकानें हमारे घर के 1-2 किलोमीटर में जो हैं जहाँ पे हम जाते थे, उसके बाद हमारा को कुछ नहीं पता था, ये बिल्डिंग है, ये दुकान है, या कुछ है. आज के ज़माने में आप देखो तो हाइपर लोकल जो है कि भाई मेरे 5 किलोमीटर रेडियस में क्या हो रहा है, कौन रहता है, कौन बिजनेस करता है, क्या करता है, हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज उसी पे ही चल रही है हमारी कम्युनिटी जो हमारे आसपास है, कि भाई किसी को ट्रैक कर रहे हैं, किसी कौन कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोग कोई बीमार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब हो रहा है. तो जो हाइपर लोकल का जो फोकस है वो एकदम से वापस आ गया. जो पहले पुराने ज़माने में होता था कि भाई मेरी सारे एरिया के मुझे सब कुछ पता होता था. आप पुराने ज़माने में अपने पेरेंट्स का सोचो तो उन्हें एक एक दुकान पता होती थी, एक एक बिजनेस पता होता था, एक एक घर पता होता था. सो using digital to connect hyper local connections will certainly important part, because उसी के बेसिस पे कम्युनिटी सर्वाइव हो रही है और आगे भी ऐसा ही चलेगा. थर्ड इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. नाउ most of us always avoided dealing with public partnership, meaning जहाँ पे गवर्नमेंट से डील करना है, जहाँ से कोई स्टेट एंटरप्राइज से करना है, दिमाग में होता था कि हाँ देयर इज ब्यूरोक्रेसी, द टाइम साइकिल ज़्यादा लगते हैं, वो लगते हैं. बट अब के टाइम में आप देखें तो दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर आप देखें आज हेल्थ केयर सिस्टम
how is it working, right? Private hospitals, public hospitals, transportation systems, right? Private operators, public operators, even education, both, public universities, private university. So as you're thinking about digitization, think of the opportunity in the public private partnership, because उसमें तो revolutionary आ सकता है, कि आज की डेट में कि आप सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको कितना पता होगा आपके एरिया के 5 किलोमीटर में कितनी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, किस तरीके के टेस्ट करते हैं, किस तरीके के लैब्स हैं, किस तरीके की प्राइसिंग है उन लैब्स में, किस में कैपेसिटी है, किस में कैपेसिटी नहीं है. तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, आप अगर अपना डिजिटल माइंड लगाएं तो इसमें देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली टू build a business but actually help the country, because usme we will be able to solve community by community, locality by locality, and so on. And then lastly, the fourth trend is about national self defense, dependence. What I mean, not defense, dependence meaning ke अब थोड़ी भी ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा शिफ्ट आएगा. अभी तक जो वर्ल्ड थी कि everybody was the global borderless world and so on. Now with this situation, अपनी supply chain reshoring, right? How we can produce the goods, make them available to customers, or how our transportation system works, and how the import export and all this stuff will suddenly become back to local, right? So आप local manufacturing का सोच लो, local supply chain का सोच लो, become a local provider. So that will bring both nationalistic pride and also self-dependence. And as Prime Minister Modi has also talked about, right, that kind of producing locally if we can. That doesn't mean that we don't collaborate and we don't get the best out of the world, but whatever we can do here. So those were like broadly 4 macro trends. I will just talk a little bit about what capabilities you should think about as students and entrepreneurs, and then probably I think open up more for questions, because that's where I'm sure most of you are keen on. First is, I think, just making sure that पहले क्या होता था, we make decisions on data, and data will always be important. But I think data now combined with intuition will become a lot more important, because every day the data is changing, right? Yesterday is, we would just take example of what gets reported yesterday versus what's happening today, and perhaps what will happen tomorrow is very real time. So इसमें जो एक होता है, मैं कहता हूँ recency frequency principle, meaning the most recent data point becomes very important for you to analyze and then apply to the next day and then do that again. पहले हम देखते थे historical trends, देखते थे कि 3 साल में ये हुआ, 5 साल में हुआ. Those are important, but I think उनकी applicability may be very subjective, क्योंकि अब world certainly changed, all the dynamics have changed. So the historical trends, they were in a certain environment, and those environment probably doesn't exist. So as you think about your skill, right, being a data driven person, but also having the intuition to apply that data, and also follow more of a discovery driven path, because nobody has the answers aaj ki date mein. I mean, people can talk, including myself, but nobody has the answers. But what we can use is an approach to discover, and kind of take a go no go approach. And because so there'll be many paths, right? As you start your business, or as you could have a startup idea, आप एक path पे चलते हैं, हो सकता है वो 3 दिन के बाद वो data उसको wrong prove कर ले, but be able to shift. So जो agility है, being able to kind of shift with almost daily data points, right? So पहले होता था लोग 2 हफ्ते में reports देखते थे कभी, या 1 हफ्ते में देखते थे. अब मैं कहता हूँ हर 1 घंटे में देखो आप. Look at the data points every hour, if you can, of your industry, of your venture, because it's just changing, because the customers are reacting differently. हर किसी की anxiousness अलग है, हर किसी की acceptance अलग है. तो that will give you a clue into how to kind of go about it. And also keep talking to customers almost every day. अगर आप किसी idea पे हैं आज की date में, don't rely on secondary research. I mean, I love media and I love articles, but ultimately those are translations of somebody who has written. आप अगर like I think कुछ लोग मेरे टीम के भी इसमें हैं. Most of us, what we do is we get up in the morning. We normally make sure हम 1-2 लोगों से बात कर रहे हैं अपने कस्टमर से. भाई क्या हो रहा है आपके बिजनेस में? How are your customers working with you? Payments आ रही हैं आपको, किस तरीके की डिमांड आ रही है, and so on, right? So no substitute for that of any business, but especially now that having the primary customer knowledge on a daily basis is very critical. Second, I think
this will be a very uncertain period for the rest of the year. Things will come back in some form of structure, but it still will be, very, very different. So I think I would say make sure invest on your own health, both physically and mentally, because I've always been talking about it, and even within our team we do a lot. But आज के ज़माने में इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं, because अगर आप because पहले होता था कि हमारे पास कुछ आंसर्स होते थे और कुछ क्वेश्चंस होते थे, आजकल हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. And to keep your mind and body calm and in the best shape is very important, because it's every day is almost a fight. You're waking up and you're fighting some new data, you're fighting some new information, and you're fighting some kind of new direction of where the country or the world is going. So investing in your own mental and physical well-being is very, very important, because that will kind of help you prepare for a marathon, right? What I call is, this is a marathon, not a sprint. So in marathon में बहुत ups and downs आते हैं, और बहुत kind of curves आएंगे. And then lastly, I think collaboration versus competition. पिछला ज़माना था सारा competition का, cutthroat competition. I think next phase in my mind would be what you call it, collaborative competitive. When I say collaborative competitive, meaning because there is so much happening and all of us are relying on each other. So even if you're in the same industry, it is not about beating your next best competitor anymore. It's all to make a good business model. So जो collaboration का element है, whether you compete with somebody, make sure you have a communication line with them, you have a collaborative line with them, you have a relationship with them in a way that you can have a dialogue. You don't have to talk about your business plan with them, that's proprietary, but you can talk about customer behavior, you can talk about how the problems can be solved together अच्छी तरीके से, ताकि ultimately इतनी बड़ी country है हमारी, और प्रॉब्लम जो भी होगी उसका स्केल इतना बड़ा होगा कि अगर 10 कंपनीज भी सेम सॉल्व कर रही होंगी तो सॉल्व नहीं होगी. And lastly, just the industries where it will go, I think education, which is what I'll go more into, right? If there is one industry which will significantly get disrupted, is this industry, right? Because अभी तक maybe digital skilling या online education दो तरीके से देखी जाती थी. एक लोग कहते थे कि यार ये तो असली एजुकेशन नहीं है. स्कूल ऑफ थॉट, आप कहीं छोटे टाउन में जाएंगे, ये तो पैसे देके डिग्री मिल रही है, पैसे देके सर्टिफिकेट मिल रही है, और कहीं जगह उसकी वैल्यू थी. अब सडनली एवरीबॉडी हैज रियलाइज्ड कि इट्स द सेम कंटेंट, इट्स जस्ट दैट आवर ओन माइंडसेट वाज कि यार अगर हम सामने नहीं बैठे और अगर हम किसी से हाथ नहीं मिला रहे तो इट्स नॉट रियल. एंड आई थिंक वो एवरीबॉडी हैज रियलाइज्ड, इट्स फोर्स्ड एवरीबॉडी टू रियलाइज कि वी कैन लर्न online, we can take exams online, we can talk to teachers online, and we can skill online. So अगर आप next phase देखेंगे, it will be the phase of gig economy. And when I say gig economy, all of us will some form of structure become freelancers, whether you work in the company or outside the company. And let me give you an example. I think if you're working in a company, the company will less look for your titles, मगर ये देखेंगे कि आपके पास क्या क्या skills हैं, क्योंकि projects जो हैं company के अंदर इतने फ्लूइड हो जाएंगे कि वो देखेंगे यार आप फाइनेंस कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, आप सेल्स कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, और प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस में यू मे गेट पुल्ड इनटू दैट, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, बट ऑलमोस्ट जो कंसल्टिंग वर्ल्ड होती थी कि आपकी प्रोजेक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं. सो दैट विल हैपन. एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज विल reduce the workforce, which we are seeing, layoffs हो रहे हैं, but the work of freelancers will increase, because अब की डेट में अगर आप वेब डिजाइनर की बात कर लें, if you talk to any web designer today, they actually have more work than before this crisis. All of them, they have a lot more projects from abroad, from the country. जैसे पुरानी कंपनी जो कभी ऑनलाइन का सोचती नहीं थी, suddenly they are building online presence. पहले लोग कहते थे यार हम चलो Amazon या Flipkart पे चले जाएंगे, अब वो कह रहे हैं हम अपना ही e-commerce स्टोर क्यों ना चलाएं. जो वेबसाइट नहीं बनाता था वो अब वेबसाइट बना रहा है. तो इसका मतलब आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, और जो ये प्रोग्राम CIPL कर रही है, और जैसे GoDaddy एकेडमी है, इट इज़ ह्यूज, बिकॉज दैट गिव्स यू दैट क्रेडिबिलिटी, राइट? बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब मार्केट में हम कस्टमर से बात करते थे कि हमें उन्हें फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनानी है, तो वो वेब डिज़ाइनर, अच्छे वेब डिज़ाइनर को कैसे ढूंढें? किसी दोस्त ने बता दिया तो ठीक है, बट अदरवाइज इट्स अ लॉटरी के कोई अच्छा मिल गया है, कोई नहीं मिला. सो ये जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं,
And certification means that both brands are putting their name behind the content, the quality, and the curriculum. And iske baad, when you go out in the market, and somebody आप उसको दिखाते हो कि this is a certification by GoDaddy and CIPL, the trust factor is there because they know that these brands are putting their whole name behind it. तो मतलब there's authenticity. और जो trust है, that will be a big factor now going forward, right? Because आज की डेट में in a world जहाँ health problems इतनी हैं, uncertainty बहुत है, trust पे ही काम चलेगा. और trust आपको कैसे मिलेगा, especially education में? If you are a reputable brand who is known for ethical standards, which is known for kind of good customer service, which is known for basically standing behind what they promise. So इस point से जो ये program है जिसमें अगर आप web certification लेते हैं, आप digital marketing लेते हैं, it will pay you off a lot more because आप कभी market में जाएं and you imagine sitting, किसी को आप कर रहे हैं कि सर मैं आपके लिए digital marketing करना चाहता हूँ, मैं आपकी web designing करना चाहता हूँ, आपको डिफरेंशिएट कैसे होगा? वो कहेंगे यार हम 5 लोगों से भी और मिले हैं, तो आप और उनमें क्या फर्क है, आप दिखाओ. आप प्रेजेंटेशंस दे देंगे, बट दैट्स द डिफरेंस. बट हैविंग दिस ब्रांड, दिस पार्टनरशिप बिहाइंड विल सर्टेनली गिव यू दैट credibility and also open up doors because जैसे GoDaddy we have over 1 million customers, so all of them keep coming to us to say कि can you recommend we can go to somebody for web designing, या can you recommend कि हम ये किस तरीके की website बनाएं. ये सारी opportunity, we always work with partners and freelancers like all of you. So I think इसमें I feel like there has not been a better time in this field, in digital services, websites, digital marketing, because everything would be digital. And I think the value you will bring is how much digital, because ये भी नहीं कि आप हर किसी को 5 चीजें करने को बोल दें digital जो उनमें से उनको 3 चाहिए, because that's where the trust and credibility comes in, right? So your job would be to balance and understand the customer business model and give them the level of digitization जो उनको help करे और उनको grow करे और उनको profitable बनाए, but इतनी भी नहीं कि वो overburdened हो जाए, because everybody is afraid कि भाई मैं इतना digitize हो गया तो मेरे को 10 लोग और रखने पड़ेंगे and so on, right? So with that, I think I will pause, Rohit, and probably I think we have Q&A next. Probably that'll be the best part of it. Yes, sir. Yes, sir. But it was really, it's a privilege to listen you. Like what happens, like जब भी मैं आता हूँ, मैं sessions deliver करता हूँ. आज first time I'm feeling कि I'm listening someone like जिसके words इतने ज़्यादा matter करते हैं किसी न किसी चीज के regarding. Sir, the concern is that हमने बहुत सारे हमारे users से subscribers से पूछा कि what do you want to ask Nikhil sir? There were lots of questions, but हमने उसमें से सिर्फ 5 to 7 ही select करे हैं, तो there are not much. But वो 5 to 7 ऐसे हैं कि I'm impressed from them कि like उन्होंने questions put up किए. मैं एक-एक करके sir I'll gonna ask those questions from you. The first question sir, जो सबका एक common question था, it is regarding one of the biggest captain of this Indian cricket team, that why did you choose MS Dhoni as your brand ambassador, and how do you associate GoDaddy with his captain cool image? Why Dhoni, sir? ठीक है. Everybody wants to ask. मेरे को लग रहा था आपने 5 क्वेश्चन, मैंने कहा अभी no, this is a great question. So when we, before signing MS, right, we, as you know, GoDaddy has been marketing, and we always make funny marketing commercials, light-hearted, जिसमें थोड़ी सी हंसी भी होती है, थोड़ा सा मैसेज भी होता है. 1.5 साल पहले हमने we realized कि the market for tier 2 tier 3 इंडिया की जो इंटरनेट पॉपुलेशन है, 200-300 मिलियन लोग वहीं से आ रहे हैं, एंड जो ऑनलाइन एडॉप्शन होगी वो भी वहीं से आएगी. तो व्हाट ब्रांड कैन वी टेक विद अस who can bring that story of authenticity, self-made, hardworking, and yet successful, and somebody who can cut across the whole country. And when we narrow down कि भाई ऐसा कौन ब्रांड हम देख सकते हैं जो कनेक्ट करेगा छोटे टाउन के बिजनेसमैन से, जिससे ट्रस्ट भी होगा, जिससे ऑथेंटिसिटी भी होगी, और साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट है, हर जगह उसका सेम परसेप्शन होगा. एंड उसमें हमें एक ही मिला, माही.
बिकॉज उसकी स्टोरी सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट यू नो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, हार्ड वर्किंग, यू नो रेलवे स्टेशन पे सोकर, यहाँ पे एफर्ट करके, ये करके, अल्टीमेटली बिकमिंग द कैप्टन एंड विनिंग, राइट? मतलब दैट स्टोरी वेरी वेल connected to what we wanted to do. And secondly, I think cricket, आप देखें तो cricket is a lifeline of the country, and having MS and having Mahi from cricket gave us that reach of, you know, billion people to give the message. So इसलिए हमने कैंपेन बनाया था बिजनेस भाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखना. और बिजनेस भाई वाज जस्ट अ कैंपेन के, यू नो, हर छोटे टाउन में एक होता है जिसपे लोग लुकअप करते हैं, उससे एडवाइस लेने जाते हैं कि सर आप बताओ आपने ये कैसे सक्सेसफुल हुए, या ये बिजनेस कैसे शुरू किया, और हमें बताओ कैसे करना है. तो हमने वो उसका कैरेक्टर बनाया. और माही के लिए ये फर्स्ट टाइम किसी ने उसको उसकी ऑथेंटिसिटी लैंग्वेज में यूज किया था. और जो मैं आपको कहानी बताता हूँ, जब हम उसको शूट कर रहे थे तो हमने सोचा 1.5 दिन लगेगा, हम आधे दिन में हमारी शूट खत्म हो गई, बिकॉज ही वाज सो नेचुरल, बिकॉज इट वाज हिज, एज इफ ही इज टॉकिंग इन हिज ओन रियल लैंग्वेज, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं. सो वो जो बिजनेस भाई का जो कॉन्सेप्ट था, वो यू नो जो हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके बनाया, उस पर बहुत यू नो रीच और रिलेशन आ गया कि पीपल से कि हाँ, यू नो वी कैन अंडरस्टैंड ये कि भाई ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है और कैसे होनी चाहिए, एंड सो ऑन. सो that was our association with MS, and it's still our brand. Yeah, business bhai. Yeah, I got it, sir. Thank you so much for all your words. There is another question which is regarding a very big personality once again, and that is obviously, sir, you. That is regarding you. Like, people want to ask you one question. Like, you are said to be an Ironman, which is one of the biggest appreciations. You have completed the Ironman triathlon, which is a dream for many, I guess, in this country. How being so active and fit helps in being a business leader? Like, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जितने भी लोग connected हैं, they all are youth between the age of 18 to 24. Business, their lives and all such things. And how you manage all such things along with your like working profile? Yeah, no, it's thank you for asking the question. You know, बहुत दिल के करीब वाला क्वेश्चन है. देखिए, दिन में 24 घंटे हर किसी के पास है, उससे ज़्यादा किसी के पास है नहीं. और जो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, वो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि वो कभी बैलेंस में होता ही नहीं. कभी वर्क ज़्यादा हो जाता है, कभी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, कभी बीच में हो जाता है. तो आई थिंक पहली कॉल जो मैंने करी थी करीब आई थिंक 10-11 साल हो गए, उससे पहले कि यू नो कि जब मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, आई हैड अ ईयर प्रॉब्लम, आई हैड अ nerve damage in my ear, and you know health was down, and you know I just realized कि you know एक चीज जो मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, वो है अपनी हेल्थ और फिटनेस पे. और दिन में मेरे को इतना टाइम उसको देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. वेदर, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, राइट, अगर मीटिंग कम कर दूंगा, मैं अटेंड नहीं करनी तो नहीं करूंगा, या उसको रीस्केड्यूल करने करूंगा, लेकिन ये घंटा जो मेरा है, ये मेरा है. एंड you know that not only physically it helps me kind of maintain in shape, but mental, अब आप आज की डेट में मेरा वो mental element ही उससे बहुत help करता है, because as you know business is up and down all the time, uncertainty is there all the time. So what is certain is this, right, that आप जैसे I go for a run, I know कि अगर मैंने 10 किलोमीटर भागना है आज, तो मैंने भागना ही है, खत्म करके मुझे लगता है मैंने दुनिया पे you know एवरेस्ट पे चढ़ गया. At least वो feeling आती है, that gives me confidence and you know makes me kind of you know kill the rest of the day in a very you know high energy way. So I think one is to make sure आप वो time निकालें, क्योंकि time सबके पास उतना ही है, आपको उसमें से निकालना है. और उसका बहुत physical benefit होता है, mental benefit होता है. mental, whether आप योगा करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, या कुछ भी करते हैं, but some combination of physical mental wellness is almost like brushing your teeth every day, कि वो तो करना ही है, उसके बगैर दिन खत्म नहीं होगा. दूसरा, I think it's also team building, क्योंकि जब मैंने आयरन मैन वगैरह किया था, मुझे था कि देखो मैं कभी ज़िंदगी में मैंने कभी स्विमिंग नहीं करी थी, और आयरन मैन क्या होता है कि आपको समुद्र में जाके ओपन वाटर में स्विमिंग करनी होती है. तो मैं तो स्विमिंग पूल तक में नहीं करी थी, ओपन वाटर में तो it was a fear I had to overcome to train, not only to be able to swim in a pool, but वहाँ जाके आप you know 2 किलोमीटर swim कर रहे हैं ओपन वाटर में, कुछ पता नहीं कहाँ तक पहुँचना है, क्या कोई कुछ रुकना नहीं. तो I took this approach as overcoming my fears, which makes you mentally strong.
कि आप कोई नई चीज़ पकड़ लें अपनी फिटनेस में भी, उसमें भी ये होता है कि सेम चीज़ मत करते रहें. अगर आप भागते हैं तो कुछ और, साइकिलिंग शुरू कर लें, साइकिलिंग करते हैं तो स्विमिंग कर लें, कुछ कर लें. चेंज करना रहता है तो उसमें आपकी एजिलिटी और बेसिकली पुशेस यू much different way. So I would say, kind of that is one thing you shouldn't compromise at all. And youth ka especially, because aaj ki date mein stress levels are high. I totally understand. Anxiousness is very high, especially in the people who are just coming out of college or going into college. And this is one thing which will stay with you forever. And the earlier you start, I mean, I regret कि मेरे को पहले करना चाहिए था. The earlier you start, the more it will stay in you and really keep you. Ultimately as a leader, that what differentiates to me half the time when I am with my peers, to say that this is what differentiates me, because I may attend 2 meetings less, or I may get 2 titles less, but this is the best title I can get, for my personal self. Oh, that's really great, sir. I think after listening you, I will follow this change in me. I will bring this change in me. I'll follow all such things. There is another question which is regarding the time period which is going right now. Like the question is regarding that COVID, obviously. Like people want to ask, like, what are your views on the growth of digital India post COVID 2000, like COVID? After COVID, what will be the growth of digital India? So I think the growth, it would be growth with purpose. And when I say, इससे पहले growth हो रही थी, digital India की भी growth हो रही थी कि हर कोई, everything was a growth. I think purpose driven growth will be important, which means that industries like healthcare, industries like education, industries like transportation, industries like supply chain, and, these industries which are basically the bread and butter, right? अगर आपके healthcare नहीं है, अगर आपकी education नहीं है, आपकी digitization, there is no doubt. I think it would be more of sustainable, and I would say with the right economics growth rather than a blind growth. In the past, what's been happening is लोग बाहर का कोई मॉडल देखते थे, उसी का इंडियन वर्जन ला के लगा देते थे. मार्केट शेयर चल रहा है, पीपल एक्वायरिंग कस्टमर्स, $100 पे कस्टमर ला रहे हैं, आप $1 से रेवेन्यू ले रहे हैं. मतलब इट वाज जस्ट, there was no sustainable model to it. So I think the digitization will accelerate, but will have a more sustainable, profitable element to it. It will also have a social element to it, meaning, helping both, as I said, public, private, and kind of, doing something for the community as part of your business model. And third, I say, is trust, because the biggest, I would say, barrier and opportunity for digitization is trust. Because जब face to face कुछ नहीं होता, तो सबसे important element trust का होता है. So if digitization is done by building, trust with your customers, with your suppliers, I see this, opportunity going much more faster than it's been. But some will survive and some won't, right? Because the pure, I would say, imported models, or वो उसको without Indian localization चला रहे थे only for market share, I think that world will slowly disappear and die. Whereas the Indian, solving Indian problems, first of all, right? If you're in India, look at the Indian problem. Think of our Indian ecosystem, कि कैसे it works. Otherwise, जैसे lot of time assumptions were made कि यार वहाँ पे चलता है तो यहाँ भी चल जाएगा. यहाँ customer different है. It's a very finicky customer who thinks a lot, very ROI focused, wants the highest level of service, wants the highest level of discounts. So we are like that. So how you kind of think through that model, and also, don't go for the entire country. I always tell people कि आप अगर कोई मॉडल बना रहे हैं तो एक सिटी में ट्राई कर लें, 2 सिटी में ट्राई कर लें, एक रीजन में ट्राई कर लें. Don't go for the whole country in one go, because it's a big country and south works very differently, north works very differently, east. And digitization doesn't mean that the customer behavior will change. Yeah, you'll be able to reach them, but customer ultimately, उसका जो ecosystem है, उसकी जो family है, उसका जो community है, वो तो सोचते एक तरीके से है ना. So making sure you go like one region at a time or one city at a time and so on. But bottom line, I think we will see much accelerated growth, but for profitable, sustainable digital ventures, not just for market share. Thank you, sir. Last 2 questions are left. One is regarding, it's a very good question from these people. Like, according to you, what is the importance of a teamwork
in building up a brand? कि एक टीम की हम क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं एक ब्रांड को बिल्डअप करने में अकॉर्डिंग टू यू सर? लाइक Yeah, so I think one is just building the brand, and two is, you know, the teamwork into it, right? I think brand probably is the most important element of any business, because ब्रांड में क्या होता है, आप ब्रांड का सोचते हैं तो इमीडिएटली इमोशंस आते हैं कस्टमर के दिमाग में. आप किसी ब्रांड का नाम सुनेंगे, इधर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे या न्यूट्रल इमोशंस आएंगे या नेगेटिव इमोशंस आएंगे. exactly. और वो इमोशंस स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो परसेप्शन स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. So how you position your brand with a purpose, you know, and I always say start the brand with a purpose and a mission. And मैं एक चीज बहुत बोलता हूँ वो क्या, be missionary first and mercenary next. तो उसका ये मतलब है कि आप सबसे पहले क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर, उसके बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें. पैसा बनाने की बात में करें, which is the mercenary part. Because if you are focused, see, if you have identified the right problems, your solution may change. Your product may be wrong, you can change it, but the problem is right. अगर आप प्रॉब्लम ही गलत तरीके से स्टेट कर रहे हैं, गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो कितने भी प्रोडक्ट बनाते रहें, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम चेंज होती जाएगी. सो फॉर अ ब्रांड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई what mission, what problem they are solving at the highest altitude. You know, this is not about we will, you know, make grow 15 times or we will make profit this time. That is more the outcome. But having the brand associated with a positive emotion that you are doing something for the customer, which is a problem today. And then second is have a social element contribution with that brand, right? Because I think as you look forward, people will look at brands very positively who have done something for the community. Because अब तक तो ठीक है लोग इतना ध्यान नहीं देते थे. आज की डेट में जो brands आगे बढ़ के, whether they're doing fundraising or whether they're helping cause or whether they're, you know, helping education or, you know, helping people, just say this partnership per se, and also what we are doing going academy, right? People at home. So how can we help people use the time better, right? And so people will remember the brand for more community involvement as much as for what they do for the, you know, product. And teamwork is very important because every person in your team represents the brand. क्योंकि brand खराब होने में एक बंदा चाहिए होता है, brand बनाने में पूरे फौज चाहिए होती है, right? Yes, so important lives and breathes that brand and really lives and breathes that mission. Because अगर वो नहीं उस पे सोचते, उस पे अगर वो buy नहीं करते, तो somehow or the other it will come out, right? I mean, I can tell you, just say, you know, I don't know if Rohit or Rajesh are on here from my customer care team, meaning we get thousands of calls every day from customers, especially in this time where we had to move everybody to work from home, but it was still 24/7. And while every brand has its challenges, you know, people really remember the appreciation कि अगर आपने 1 बजे उनकी कोई call लेके कुछ solve कर दिया, you know, it's a huge thing in this crisis when you're not able to, you know, connect and talk. So being there, you know, with your team and every team member, you know, like wearing the brand on their heart and on their sleeve is very important. So I think brand ultimately is a collection of the team believing in that mission. So very important. Thank you so much, sir. I would like to add something in this because obviously my team is also here. So मुझे पता है कि एक teamwork कितना important है एक brand को build up करने में. So obviously I always appreciate my whole team across the nation जिनकी वजह से CIPL एक brand बन रहा है मार्केट के अंदर या बन चुका है. And obviously I would like to add something about GoDaddy sir over here because मेरा GoDaddy के साथ बहुत close relation रहा है. I guess 2015 में I took charge of this company. I became in charge of this company. I took this company as in like I will gonna make this company more bigger in the market. So I got a chance to meet one person from GoDaddy. मैं उन सबके नाम जरूर एक बारी लेना चाहूंगा यहाँ पे, मिस्टर गौरव नकुल. Because गौरव, when I met गौरव, मुझे बिलीव हुआ कि CIPL और GoDaddy मिलके कुछ कर सकते हैं. मेरी गौरव से भी परसों भी एक चैट हो रहा था, तो उसमें मैं उनको ये बता रहा था आज ये सब कुछ हो रहा है, तो जब आपने हमें GoDaddy से इंट्रोड्यूस करवाया था शायद उसकी वजह से तो हो रहा है. सो गौरव, रियली you know, I appreciate your efforts towards CIPL and thanks a lot to you कि जिसकी वजह से हो पाया. शायद you are also a, you know, very important part of this team of GoDaddy. Then there is another person, Mr. Arun Agarwal. I met him in like January, February. So when I met him, so he came up with this idea, GoDaddy Academy and all such things. So thanks to Arun, again, a very important part of this GoDaddy team.
कि जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, ये GoDaddy Academy एंड टेक्निक्स मिलकर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है फॉर द young entrepreneurs, or you could say for people who want to, get involved with this digital marketing. Now, there is another person who came really close to my heart in past few 15 to 20 days, Mr. Amit Thakur. Obviously, what a man he is, what a kind of, the thinking process he has in his mind, everything is damn good in him. मेरे को पता है कि हम जब इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, थैंक्स टू अमित टू यू, कि लाइक आपकी वजह से इट इज ऑल पॉसिबल कि हमें सब कुछ कर पाए. हर चीज में मैं शिवम से, प्रमोद से हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी चीज के लिए हमें कभी भी अमित ने मना नहीं किया. 100% सपोर्ट हमारे हर एक चीज के ऊपर दिया. थैंक्स टू अमित. एंड मैं अपनी पूरी टीम को एक बात बताना चाहता हूँ, सून you will gonna see Mr. Amit Thakur live with Pramod Jasoria sir for a session in coming next 2 weeks. He's a strategic head of GoDaddy India and solely taking care of that GoDaddy Academy. मैं बता रहा हूँ अभी से आपको, जितना एक्साइटेड आप निखिल सर को सुनकर है, उतना ही एक्साइटेड आप अमित सर को सुनकर भी होने वाले हैं. अगेन अ विजनरी माइंड, यू कुड से अ पायनियर इन एजुकेशन फील्ड, who knows कि एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है. तो थैंक्स टू अमित सर ऑल्सो फॉर ऑल सच थिंग्स. जैसे सर, मतलब आई नो दीज पीपल इन योर टीम. सिमिलरली मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज CIPL ब्रांड बन पाया. और उस पूरी टीम का सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो मैं पूछना चाहता था आपसे, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं राइट नाउ, दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 राइट नाउ. तो एक क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहता था, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई नो आपका 4 o'clock एक और सेशन है अभी. That question is like, what will today's Nikhil guide a 20-year-old Nikhil in terms of career and life goals? So Rohit, first of all, I think Arun and Gaurav and Amit and I think the other folks on this group as well, who equally worked hard, Rakesh, Amar, Apurva, Shivashish, John, there's just Rahul. I mean, there's just goes on and on the list. So thank you everybody, because ultimately, leader is sum of all the people who do the work, and leader just gets to take the credit. So thank you, thank you very much. I think if the question aapka tha ki what would I tell a 20-year-old today if I was in the same boat, what would I look at Exactly. life in what? Yeah. To be honest, Rohit, I have always, I would look at it in the same way actually, and I'll tell you why. I'll give you an example. I changed my education stream 4 times in 1 year when I left school after 18. I tried hotel management, I tried economics, I tried engineering, then I tried a language, and then ultimately I landed doing, kind of taking a business degree. I changed cities in the first year after my school. I changed countries 3 times. I was in India, I went to Russia, then I was in US, and then came back to Russia. I mean, so on. So, what I always did was I always liked the uncertainty of life and experimentation of life. And in that age, the confidence for me was, यार fail हो गए तो हो गए, अभी तो 18 के हैं, 19 के हैं, 20 है, 21 है, तो क्या जाएगा ज़्यादा, फिर शुरू कर लेंगे. In my time, people will be worried, अरे 1 साल पीछे हो जाओगे, अरे आप 1 साल पीछे हो गए, मैंने आपसे कॉलेज 1 साल पहले ख़त्म कर लिया, मैंने जॉब आपसे 1 साल पहले ले ली. When you look back, does it really matter? आज की डेट में somebody who's 10 years junior may be doing 10 times better than me, and vice versa. But does it really matter now, right? So I would say, look at the uncertainty as an opportunity, and I think आज की डेट में it is more uncertain than there ever been. And so I think about it as, I would, I don't mean in the wrong way, but as an opportunity of a lifetime to do things which can transform the world, right? I mean, किस टाइम में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें अगर आप हेल्थ केयर सोच रहे हो, एजुकेशन सिस्टम सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कि वो पूरा रेवोल्यूशनाइज कर सकते हो, राइट? सो आई वुड से डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट get caught up in anxiousness. Obviously, health-wise, you have to do all what the government is asking you to do, but don't stop thinking and start putting your mind to constructive thinking, right? Because, problems aapke samne hain. Just start thinking, and also one thing I did, I'll share with you, was that I used to always keep a tab of people I meet, whether आप conference में मिल रहे हो, कहीं किसी जगह जाके मिल रहे हो, and I always kept in touch with them. And I can promise you, every one of them in some form or structure has had an impact on my life and my success, directly, indirectly. So the relationship building जो है,
is very important. And also reach out to people, right? I mean, reach out to people. Go, and if you want to talk to somebody, whether they're a you will develop a relationship, and so later on when you want to do business with them, you will be able to do it much easier because you had a relationship versus cold calling and saying, I'm selling this kind of stuff, right? So I would say embrace the uncertainty. It's a transformational time. Build relationship, and एक दो साल आगे पीछे हो भी गए, कुछ आपने ट्राई किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस ही व्हाट अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर. यही मैं जानना चाहता था, तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि फेलियर से कभी नहीं घबराना चाहिए. यू शुड मूव फॉरवर्ड. सक्सेस इज देयर. मैं इसी चीज को फॉलो करने में बिलीव करता हूँ. एंड थैंक यू सो मच टू यू कि आपका इतना जो पॉजिटिव थिंकिंग है लाइफ को लेकर, वो हम सबको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है. वैसे देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस. अगर मैं करना शुरू करूं तो इट विल टेक 1 more hour फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस वी हैव सिलेक्टेड टू आस्क यू. Thank you so much for your words, sir. Like, we will definitely follow all such things. Pehli, business bhai. Second is we have to become an Iron Man for sure. Third, positive thinking and focus towards life. Fourth, like focusing on digitalization. And fifth, never be afraid from failures. Always go for a success. You will definitely gonna get it. We will definitely follow all such things, sir. And and Rohit, if there are questions people couldn't we could ask, but feel free to send it out, and we're happy to kind of respond and follow up and stuff. And last thing I want to add is please do and get involved in charitable causes, because it is very good for your soul. Helping somebody else in some sort of need today is most important, and we are doing our bit, and I'm sure all of you are doing, but please do get involved. Even if it's one person, आप एक person को भी help कर दोगे, it will make you feel the biggest person in the world. Definitely, sir. We CIPL have made a fund that is known as CVOID 2019. C Void Fund. That is like everybody is pronouncing COVID, we are pronouncing CVOID Fund, which is known as Corona Void. We are going to void Corona very soon from this country. So wonderful. On that fund, CIPL is already working on that fund, and we will definitely follow your words, sir. We will definitely, do all such things, all charities and all such things. Thank you so much for your time, sir, for your words. I know it is really tough for you. इतना टाइम निकाल के आना इस यूथ के लिए. थैंक यू सो मच फ्रॉम होल CIPL family, from whole CIPL team कि आपने ये टाइम निकाला. It was our pleasure, and we'll definitely wanna see you soon, very soon, sir. Sure, thank you. All right. Thank you so much, everything. Thank you, everybody. It was pleasure, and keep safe and stay safe, and we'll be in touch through at least on Instagram or LinkedIn or wherever you use. Feel free to stay in touch. It'll be wonderful to learn from you guys as well. Thank you so much for your words, sir. Thank you so much for everything. Thank you so much to whole GoDaddy team, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks. Okay, sir. Take care, sir. Bye-bye. Thanks. So as you know, कि like what a session it was. मैं पहली बार किसी को सुन रहा था आपके सामने, and it was amazing, means amazing. See guys, एक great leader, एक great इंसान वही होता है जो बात उन्होंने कही कि become focus in your life. Focus बनना बहुत जरूरी है. Never be afraid of failure. ये बात हम पहले भी शेयर करते हैं, और आज इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने भी बात बोली है कि हमें कभी नहीं घबराना चाहिए कि हम 1-2 साल पीछे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा. कीप ट्राइंग इन योर लाइफ, कीप मूविंग इन योर लाइफ. आप औरों से बहुत अच्छे और हमेशा अच्छे रहोगे. सी आज ये सब कुछ, आज अगर निखिल अरोड़ा सर वाज हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, क्योंकि आपके एफर्ट्स की वजह से CIPL एक मार्केट में ब्रांड है, और वो CIPL का एसोसिएशन हो पाया GoDaddy के साथ. अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अमित ठाकुर, मिस्टर गौरव नकुल एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल फॉर ऑल सच थिंग्स, जिसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है. एंड स्पेशल थैंक्स टू अमित, टू यू. सून वी आर गोइंग टू लिसन यू लाइव along with प्रमोद जसोरिया सर, टू powerhouse of knowledge together in a live session within next 2 weeks. मैं आपको पहले से अनाउंस कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोग इन लोगों को सुनने वाले हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर हियर, अपना समय यहाँ देने के लिए. फर्स्ट 2 अनाउंसमेंट्स को याद रखिएगा. टॉप 100 ब्लॉगर्स, along with that स्टार्टअप का सबसे बेस्ट आइडिया. डू एनरोल फॉर द कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. जल्द से जल्द एनरोल करें, उससे नॉलेज ग्रैब करें, वो एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बने. जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आप GoDaddy के ऊपर लिस्ट हो पाएंगे एज अ फ्रीलांसर. ट्रेनिंग पाइए और GoDaddy सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन जाइए.